I congratulate and greet to all the students of plus 2 first year political science who are sitting in front of me for hearing of my lecture. In the previous class, I have discussed about the various important arguments in favor of individualism. But in today's class, I am going to discuss about different criticisms leveled against individualism. First of all, at the outset of my class, I start my discussion with you in Odia language. व्यक्तिवाद को निम्नलिखित भित्तिभूमि गुड़िक उपरे समालोचना करा जाई पारे। प्रथमतः व्यक्तिवाद तत्व राष्ट्र को एक मंद अनुष्ठान रूपे अभिहित करिथाए, किंतु एही जुक्ति आदौ यथार्थ नुहे। कारण व्यक्ति सर्वदा व्यक्तिर नैतिक और वस्तुगत उन्नति कामना करिथाए। राष्ट्र व्यक्तिर विकास रे प्रतिबंधक हुए नहीं, बरं प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव रे व्यक्तित्वर विकास रे सहायता करिथाए। तेणु वास्तव रे कहिले राष्ट्र एक आवश्यकीय मंद अनुष्ठान न होई एक जनमंगलकारी संस्था रे परिणत होइछि। द्वितीयतः व्यक्तिवादर नैतिक जुक्ति अनुजाई व्यक्ति ही निजे निजर गुण, योग्यता, दक्षता और स्वार्थर श्रेष्ठ विचारक। यह केतेकांशरे सत्य होई पारे, मात्र यह संपूर्ण सत्य नुहे। कारण व्यक्तिर दृष्टिकोण सीमित, लोभ, क्रोध, ईर्षा भाव प्रवणतार वशवर्ती होई व्यक्ति अनेक समय भूल निष्पत्ति नहीं निजे निजर अहित बा क्षति साधन करिथाए। समयर परिवर्तन, आह्वान और जटिलता दृष्टिकोण व्यक्ति बहु समय उचित निष्पत्ति ग्रहण करिपारे नहीं। एपरि क्षेत्र रे राष्ट्र ही व्यक्ति को उचित मार्ग रे परिचालित हेबा पाई मार्गदर्शन करिथाए। व्यक्तिवादर तृतीय गुरुत्वपूर्ण समालोचना हेउछि व्यक्तिवाद अर्थनैतिक क्षेत्र रे व्यक्ति को सर्वाधिक स्वाधीनता प्रदान करिथाए और राष्ट्रर हस्तक्षेप को बारण करिथाए। यह मुक्त बजार अर्थनीति और अबाध प्रतियोगिता को सर्वदा उत्साहित करिथाए। मुक्त बजार अर्थनीति बा फ्री मार्केट इकोनॉमी पुंजीवाद बा कैपिटलिज्म सृष्टि करिथाए। पुंजीवाद, मुक्त बजार अर्थनीति और अबाध प्रतियोगिता सबु समय और सबु क्षेत्र रे सुफल दिए नहीं। पुंजीवाद रो सर्वदा एकचाटिया कारोबार, मूल्य वृद्धि, मात्राधिक उत्पादन, बेकारी इत्यादि समस्या सृष्टि होता है। चतुर्थतः प्रोफेसर हर्बर्ट स्पेंसरंकर व्यक्तिवाद तत्वर वैज्ञानिक बा जैविक समर्थनकारी जुक्ति मानव समाज पाई अप्रासंगिक और नीतिहीन अटे। यह मानविक मूल्यबोध उपरे प्रतिष्ठित नुहे। आधुनिक सभ्य समाज पाई एही नीति ग्रहण योग्य नुहे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, विवेक, चेतना, पारस्परिक सहयोग, नैतिकता प्रभृति मनुष्यर सहजात प्रवृत्ति। रक्तपात और हिंसा उपरे आधारित जीवन संग्राम तत्व मानव प्रकृतिर विरोधी अटे।
अध्यापक डार्विनकर जीव विवर्तनवाद तत्व बा सिद्धांत को जदि ग्रहण करा जाए तेबे समाज रे परिशेष रे केवल जड़े मात्र सबल बा शक्तिशाली व्यक्ति तिष्ठि रहिबो और अन्य मानक सत्ता कुआड़े हजिजीव। उभय व्यक्ति और समाज विलुप्त हेबो बा संपूर्ण लोप पाइजिवो। व्यक्तिवाद को आमे परवर्ती भित्तिभूमि उपरे मध्य समालोचना करि परिबा। व्यक्तिवादी तत्व व्यक्तिर प्रतिभा दक्षता और योग्यता उपरे गुरुत्व प्रदान करिथाए। मात्र समाज रे बसवास करुथुवा प्रत्येक व्यक्ति समान योग्यता और समान दक्षता संपन्न नुहंती। निजर समस्यार समाधान करिबा व्यक्ति पक्षे सर्वदा संभवपर नुहे। षष्ठतः व्यक्तिवादी मतरे राष्ट्र निज कार्य साधन निमंते आईन प्रणयन करी व्यक्ति स्वाधीनता को सीमित करने को चाहे। व्यक्तिवादी मानक मतरे राष्ट्रर आईन संख्या वृद्धि हेले व्यक्ति स्वाधीनता ह्रास पाई थाए। वास्तव में यह एक भ्रमात्मक धारणा। राष्ट्रर आईन ही स्वाधीनतार रक्षा कवच अटे। आईन और स्वाधीनता परस्पर विरोधात्मक नुहंती। सप्तमतः व्यक्ति और राष्ट्र परस्पर विरोधी नुहंती, किंतु व्यक्ति और राष्ट्रर स्वार्थ परस्पर परिपंथी बा विरोधात्मक बोली व्यक्तिवाद एक भ्रमात्मक धारणा सर्वदा सृष्टि करिथाए। वास्तव में कहिले व्यक्तिर स्वार्थ और राष्ट्रर स्वार्थ परस्पर परिपूरक अटे। व्यक्ति समूह को नहीं राष्ट्र सृष्टि होइथाए। व्यक्ति स्वार्थ माध्यम रे राष्ट्रर स्वार्थ साधित होइथाए। सर्वशेष आधुनिक समाज नाना प्रकार जटिलता विवाद और समस्यार सम्मुखीन होउची, जहार समाधान पाई राष्ट्रर सहायता और हस्तक्षेप एकांत आवश्यक अटे। राष्ट्र द्वारा व्यक्ति मानकर अनेक जटिल समस्यार समाधान होइथाए। आलोचनार अंतिम पर्यायर संक्षेप में मुझे मात्र कहबी जे एतिकी मात्र मु कहबी जे 19 शताब्दी रे लोकप्रियता हासिल करिथिबा व्यक्तिवाद 20 शताब्दीर प्रथम भाग बेलू यार ख्याति बा जनप्रियता हराई बसीथिला। आधुनिक समाजर जटिलता और जनमंगल राष्ट्रर चिंताधारा व्यक्तिवाद तत्व को निष्प्रभ और दुर्बल कर देइथिला। एही तत्व बा सिद्धांतर अवक्षय सत्वे यार मानविक मूल्यबोध को अस्वीकार करा जाई पारिबो नाही। I have discussed all the above points against individualism in Odia. Now I discuss the exact topic regarding the criticisms leveled against individualism in English language. I start my discussion by criticizing individualism on the following grounds, one after the another, briefly. Critics of individualism have criticized individualism on the following grounds. It is wrong to say that state is a necessary evil. It did not originate only for checking selfishness and evil doings of some people. On the contrary, it emerges naturally for satisfying several essential requirements, particularly security needs of the people. Aristotle, once upon a time, has rightly commented that the state came into existence for the sake of life and continues to exist for the sake of good life. State is a natural and necessary institution for the protection, preservation and development of individual life. It regards individual life. State is a natural and necessary institution
for the protection, preservation and development of human life in all its dimensions. Second criticism leveled against individualism is that it is wrong to say that the activities of state are opposed to individual liberty. It is only when state maintains law and order as well as the essential conditions for civilized living that the people really enjoy their liberty. Liberty is not the absence of restraints. Unrestrained liberty is neither needed nor possible. It is possible only in a jungle. In society, the individual cannot be given this license. Real liberty demands some rational restraints. Those are restraints necessary for maintaining public health, morality, order and security. Thirdly, I criticize individualism on this particular ground. Individual is not always the best judge. Faith in individual wisdom and capacity is good. However, it cannot be accepted that the individual is always the best judge of his interest and needs. He can be selfish and subjective in evaluating social requirements or the requirements of others. Neither each individual has equal power nor equal needs and nor even equal wisdom, experience and capacity. Society is a better judge of intellectual, moral and even physical needs of the individual. The next criticism leveled against individualism is that rights and freedoms of the individual need protection from external and internal constraints. State acting through its judiciary acts as the guardian or acts as the protector of the rights of all the people. People can enjoy their rights only under the rule of law and not in its absence. I criticize individualism in the next background, that is, modern state is a welfare state. It is indeed wrong to regard the state as a police state or as a necessary evil. The state is a welfare state committed to pursue common good. It is wrong to believe that state action for promoting the welfare of all and the common good of society involves a limitation of individual freedom. It is indeed essential that the state should act for eliminating social evils. The next criticism against individualism is that free competition, free trade and free enterprise can lead to economic prosperity and economic growth. However, unregulated economic freedom can lead to bigger and bigger inequalities and exploitation in society. These always act as a source of miseries, ill health, hunger and disease for the weaker sections of society. The role of the state is needed to safeguard the interest of the poor and weaker sections of society. The next criticism against individualism is that the struggle for existence and survival of the fittest are dangerous principles. These principles cannot be regarded as the best principles for living and development. These operate only in a jungle where the stronger animals can live by killing and eating smaller and weaker animals. In society, all the people, whether strong or weak, have the right to live and enjoy the protection of state. The state acts for the protection of the interest
of all the sections of society. The acceptance of these two principles would make each individual a law unto himself, and the net result would be disorders, anarchy, chaos, confusion, violence, misery, death, and destruction. The last criticism against individualism is that individualism wrongly conceives of society as a collection of individuals. Such an atomistic view of society is completely wrong, erroneous. Society is something more than a mere coexistence of several individuals. Social good is something more than individual good. Society is a web of social relations, and promotion of social welfare requires collective efforts under uniform state laws and policies. The individual is an integral part of the society. Social welfare means welfare of all people. No doubt there can be no society without individuals. However, it must also be remembered that a civilized living can be possible only within the jurisdiction of the state. On the basis of these arguments, the concept of individualism has been vehemently criticized. व्यक्तिवाद तत्वर समालोचना गुड़िक गोटिक पर गोटे उभय इंग्राजी और ओडिया भाषा रे आलोचना कर सारिबा परे मु आजिर क्लास को अंत करने को जाऊँगी। जदि तुमे माने এই ভিডিওটি को पसंद करुथाओ तेरे भिडियोटी को लाइक और शेयर करिवो। इन एडिशन टू ऑल दिस पॉइंट्स ए चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ने सेट करिवो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।